नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आइ हम सब देखब ए वीडियो के अंतर्गत अलंकारक तेसर भेद अछि उभयालंकार। एहि सब पूर्वक वीडियो सब में हम सब देख चुकल छी शब्दालंकार आ अर्थालंकारक भेद सब। आइ अलंकारक अंतिम वीडियो अछि जाहिमे हम सब देखब तेसर अलंकार अछि उभयालंकार। उभयालंकारक मुख्यतः दूटा भेद अछि, संसृष्टि उभयालंकार, संकर उभयालंकार। ये दुनू अलंकारक लक्षण, उदाहरण, परिभाषा सबके देखब। यदि एखन धरि अपने RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं कने छी तो सब्सक्राइब कर ली। आओ देखे छी उभयालंकार। उभय शब्दक अर्थ होइत अछि दू। एहि में उभयालंकार में या उभयालंकारक पद सब में दूटा या दू से अधिक अलंकारक लक्षण सब गुण सब मिलत। देखो जाहि पद में शब्दगत आ अर्थगत दुनू प्रकारक चमत्कार रहैत अछि से शब्दार्थालंकार या उभयालंकार होइत अछि। एहिसँ पहिले हम सब पढ़ि चुकल छी शब्दगत जे छल ताके शब्दालंकार कहलिए, जे अर्थगत अलंकार छल जे अर्थालंकार भेल। उभयालंकार में जे अछि शब्दगत आ अर्थगत दुनू प्रकारक चमत्कार रहैत अछि, तैँ ओ शब्दार्थालंकार जाहिमे शब्द आ अर्थ दुनू अलंकार रहत, एकरा उभयालंकार सेहो कहल जाइत अछि। उभयालंकारक मुख्यतः दूटा भेद वा दूटा प्रकार अछि। पहिल अछि संसृष्टि उभयालंकार, दोसर संकर उभयालंकार। दुनू में विशेष अंतर नहीं अछि। संसृष्टि उभयालंकारक पद जे रहत जे कनि आसान रहत, एहिमे सब अलंकार आसानी से निकल जात, सब अलंकारक लक्षण सब आसानी से नजर पर आबि जात। लेकिन संकर उभयालंकार में कनि कठिन रहैत अछि, पद सब में देल रहत, एहिमे अलंकार के भिन्न भिन्न लक्षण के देखब कनि कठिन भऽ जाइत अछि, तो भऽ गेल संकर उभयालंकार। आब दुनू के बारी बारी से लक्षण आ उदाहरण सब देखब। पहिल अछि संसृष्टि उभयालंकार। संसृष्टिक अर्थ होइत अछि संबंध, संबंध, लगाव, मेल, संसर्ग इत्यादि सब होइत अछि। संसृष्टिक अर्थ भऽ गेल संबंध, लगाव, मेल, संसर्ग। संसृष्टि उभयालंकार में अनेक अलंकारक एकत्र रूप रहैत अछि, जहिना तिल आ तंडुल। तंडुल से तात्पर्य चावल। जहिना तिल आ चावल एक दोसरा में मिलेलाक उपरांतो दुनू पृथक रूप से पहचानल जा सकैत अछि, तहिना संसृष्टि उभयालंकार में उपस्थित शब्दालंकार आ अर्थालंकार के आसानी से चिन्हल जा सकैत अछि। देल अछि तिल आ तंडुल। तंडुल मान तिल आ चावल के जब मिला देवे तो से कहब मैंने कतबो मिलाओल रहते तिल आ चावल के, ढेरी में से कहब जो 10टा तिल आ 10टा चावल के निकाले ला तो आसानी से निकाल सके छै। दुनू के अलग अलग पृथक पृथक पहचानल जा सकैत अछि, तैँ वो संसृष्टि उभयालंकार भेल, जिसमें शब्दालंकार आ अर्थालंकार के आसानी से चिन्हल जा सकैत अछि। जेना उदाहरण में देखब, पहिल उदाहरण अछि बदन चांद तोर नयन चकोर मोर, रूप अमी रस पीवे
अधर मधुरी फूल पिया मधुकर तुल, बिन मधु कतखन जीवे। ये अलंकार में एक से अधिक अलंकारक लक्षण सब मिलत। ऐसे पूर्व हम चर्चा कर चुकल छी जे एकटा गद्यांश पद्यांश में एकटा पद्यांश जे रहत ताहि में एक से अधिक अलंकारक लक्षण सब मिल सकैत अछि। जे रूपक के रहत तो भऽ सकैया भ्रातिमानो अलंकार के रहत, उपमा अलंकार के रहत, अंत्यानुप्रास या अनुप्रासो अलंकार के रह सकैत अछि। अनेको अलंकारक लक्षण एकटा पद में मिल सकैत अछि। ताहिमे अछि बदन चाँद तोर नयन चकोर मोर, रूप अमी रस पीबे। में उपमा देल गेल अछि बदन चाँद तोर, नायिका के बदन जे अछि चाँद से एक उपमा देल गेल अछि। आ नयन चकोर मोर, आ नायक बाजि रहल अछि पद के जे नयन चकोर मोर, जे हमर नयन जे अछि चकोर के समान अछि। तऽ आँखि के उपमा देल अछि चकोर पक्षी से, आ बदन के चाँद से, नायिका के बदन के। रूप अमी रस पीबे, रूप अमी रस पीबे में भऽ गेल रूपक अलंकार। रूप अमी रस में रूपक अलंकार लक्षण अछि। आ चाँद बदन चाँद तोर अमी नयन चकोर मोर, जहिना चकोर पक्षी जे अछि राति में निकलैत अछि आ ओ चाँद के देखैत रहैत अछि ऊपर देख के, तहिना नायक के आँखि जे चकोर पक्षी समान अछि आ नायिका के चाँद रूपी शरीर के देखैत अछि आ ओकर अमृत के रसपान करैत अछि। रूप अमी रस, सौंदर्य रूप के रस के पान करैत अछि, अमृत सौंदर्य रूपी अमृत रस के पान करैत अछि। तो भऽ गेल रूपक अलंकार के आ उपमा अलंकार के। ये दुनू अलंकारक में लक्षण अछि। फिर आगा अछि अधर मधुरी फूल पिया मधुकर तुल। अधर माने ओठ, नायिका के ओठ मधुरी फूल समान अछि आ पिया मधुकर तुल, आ स्वामी जे छनि हुनकर पिया जे मधुकर माने भ्रमर के समान अछि। ताहिमे स्वामी के भ्रमर से उपमा देल गेल अछि आ ओठ के ठोर के मधुरी फूल से उपमा देल गेल अछि। इहो में उपमा अलंकारक लक्षण अछि। बिनु मधु कतखन जीवे, इहो में रूपक अलंकार के भऽ गेल। एहिके बाद देखब जे एहिठाम पीबे आ जीवे अंत्यानुप्रास के भऽ गेल। तऽ अनुप्रास अलंकारक लक्षण में सेहो अछि। जीवे आ पीवे, अंत्यानुप्रास में कने छल केश छत्ता जकाँ, आँखि खत्ता जकाँ जकाँ जे छल जो अंत्यानुप्रास छल, इहो में जेना जीवे पीवे आ जीवे भऽ गेल अनुप्रास अलंकारक लक्षण। तो वही एकटा पद में हमरा सब देखलहुँ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आ अनुप्रास अलंकार, तीनू अलंकारक लक्षण सब अछि। तो भऽ गेल संश्लिष्ट अलंकारक लक्षण। उदाहरण अगिला और उदाहरण देखब, इहो में नायिका के वर्णन अछि। नाभि विवर सो रोम लतावली, भुजंग निशास पियासा, नासा खगपति चंचु भरम भय, कुछ गिरि संधि निवासा। नाभि विवर सो, इमें नायिका के नाभि के छिद्र से रोम लतावली, रोम माने भऽ गेल रुइयाँ जकरा कहै छियै, तऽ रुइयाँक पाँति एहन निकलल अछि एकटा रेखा के समान, जे एना लागि रहल अछि जे एहिमे से भुजंग निशास पियासा, जे नागिनी जे अछि, नागिन जे साँस लेबाक लेल कंदरा से या गुफा से बाहर निकलल अछि। नायिका के नाभि से ऊपर रुइयाँ के जे लाइन रहैत अछि रेखा, तकरा कहल गेल अछि रोम लतावली। नाभि विवर सँ रोम लतावली, भुजंग निशास पियासा,
एहिना लागि रहल अछि जेना नागिन साँस लेबाक लेल कंदरासँ बाहर निकलल अछि। ताहिमे भऽ गेल उपमा अलंकार सेहो अछि। नाभि विवर, रोम लतावली के नाभि के ऊपर के रुइयाँ के उपमा देने अछि। तकर बाद रूपक अलंकार के सेहो अछि। फिर नासा खगपति चंचू भरम भय। नासा माने नाक जे अछि नायिका के से लागि रहल अछि खगपति चंचू, गरुड़ पक्षी चोंच के समान लागि रहल अछि, जेके भरम भय। आ नाग जे निकलल छल, नाग रूपी रोमलता, ओ फेर डर से नुका रहैत अछि, एकरा भ्रम से भय भऽ जाइ छै। ताहिमे भ्रांतिमान अलंकारक सेहो पद भऽ गेल। कुछ गिरि संधि निवासा, से पुनः जे चोंच जे विवर रोमलतावली निकलल अछि, जे पुनः नायिका के कुछ गिरि माने पयोधर जे अछि दुनू, गिरि माने पर्वत के समान, दुनू संधि पर्वत के संधि के समान अछि। एहिमे जाके फेर ओ नुका रहैत अछि। इहोमे ओहि पदमे देखलहुँ हमसब 3टा अलंकार मिलल, रूपक, उत्प्रेक्षा आ भ्रांतिमान अलंकार। तैयो संसृष्टि उभयालंकारक उदाहरण अछि। नाभि विवर सँ रोम लतावली, भुजंगिनी निशास पियासा, नासा खगपति चंचू भरम भय, कुछ गिरि संधि निवासा। एहिमे 3टा अलंकार मिलल। आ ई संसृष्टि उभयालंकारक बहुत नीक उदाहरण अछि। एहिमे नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। नायिकाक वर्णनमे नाभिसँ ऊपर हुनकर जे रुइयाँ निकलल रहै छनि, आ फेर पुनः पयोधरमे नुका रहैत अछि। तऽ जेना लागि रहल अछि ओहिमे उपमा देने छै जे कोनो नागिनी साँस लेबाक लेल निकलल अछि, आ पुनः नायिकाके नाकके चोंच रूपी नाकके देख के फेर नागके भ्रम भऽ जाइ छै जे कोनो गरुड़ अछि, जे हमरा कोनो खा नहि लए। तऽ फेर पुनः नायिकाके पयोधर रूपी गिरि जे अछि, एहिमे जाके नुका रहैत अछि। अगिला और अलंकार भेल उभयालंकारक दोसर भेद अछि संकर उभयालंकार। संकर शब्दक होइत अछि मिश्रण। संकर शब्दक अर्थ भऽ जायत मिश्रण। जाहि पदमे एकाधिक अलंकारक, जाहि कोनो पदमे एक से अधिक अलंकारक निर्छिरवत, अर्थात निर्छिरवत के अर्थ भऽ गेल पानि आ दूध सदृश सम्मिश्रण रहैत छै। पानि आ दूध सदृश मिश्रण जे रहत, ओ पद संकर उभयालंकारक मानल जाइत अछि। जेना ओहिसँ पहिलेमे देखने छलहुँ हमसब संसृष्टि उभयालंकारमे जे चावल आ तिलके समान छलै, जाहिके अलग कऽ सकै छलियै चावल आ तिलके। लेकिन जाहिमे दूध आ पानि जे अछि, एहिके अलग मिश्रणके अलग केनाइ कनि कठिन अछि। तऽ देने अछि जे जाहि प्रकारक पदमे पानि आ दूधक सम्मिश्रण सदृश जे रहत, तऽ ओ संकर उभयालंकारक मानल जायत। एहि अलंकारक पृथक अस्तित्व ज्ञात करब कठिन होइत अछि। संकर उभयालंकारक जे अछि पद जे रहत, ओहिमे से आन अलंकारके भेदके अलग करब कनि कठिन भऽ जाइत अछि। लेकिन दोनोमे लगभग कोनो बेसी विशेष अंतर नहि अछि। उदाहरण देखब संकर उभयालंकारक। आज देखल धनि जाय तेरे, मोहि उपजल रंग, कनक लता जन संचर रे, मही निरअबलम, तापुन अपुरूप देखल रे, कुछ युग अरविंद, विकसित नहीं कुछ कारण रे, सोझा मुख चंद। इससे पूर्व ओहि पद के अलंकार में देख चुकल छी। में आज देखल धनि जाय तेरे, मोहि उपजल रंग। एक पद्यांश में देखब
सोझा मुखचंद। सोझा मुखचंद एहि काव्यांशमे जे अछि नायिकाके मुख चाँद अछि, अर्थात एहिठाम जे अछि नायिकाके मुखके उत्कर्ष वर्णन कयल गेल अछि। तऽ व्यतिरेक अलङ्कारक भऽ जाइत अछि जे जाहिठाम उपमानक निषेध कऽ उपमेयक उत्कर्ष वर्णन कयल जाइत अछि तऽ व्यतिरेक अलङ्कार होइत अछि। तऽ ओहिमे व्यतिरेक अलङ्कारक की सोझा मुख चंद के नायिकाके मुख चाँदके समान कहल गेल अछि। तऽ चाँदसँ बेसी विशेष नायिकाके मुखके बढ़ाओल गेल अछि, उत्कर्ष वर्णन कयल गेल अछि। फेर देखब एहि पद्यांशमे कल्पना सेहो कयल गेल अछि जे नायिकाक कमल रूपी अविकसित पयोधर कुछ युग अरविंद जे अछि विकसित नहि कुछ कारण रे कुछ युग अरविंद जे अछि अविकसित पयोधर जे अछि जे चंद्र रूपी मुखके कारणे विकसित नहि भऽ रहल अछि, ताहिमे उत्प्रेक्षा अलङ्कार सेहो अछि। उत्प्रेक्षा कयल गेल अछि जे कमलके नायिकाके कुचसँ पयोधरसँ, तऽ उत्प्रेक्षा अलङ्कारक सेहो भऽ गेल। पहिल देखलहुँ व्यतिरेक अलङ्कार, दोसर उत्प्रेक्षा अलङ्कार। फिर एहिमे युगल पयोधरके कमलसँ आरोप कयल गेल अछि कुछ युग, तऽ हाइफन सेहो देल गेल अछि कुछ युगके बीचमे आ मुखचंदके बीचमे। पहिलेयो चर्चा कऽ चुकल छी जे हाइफनके प्रयोग कयल गेल अछि दू शब्दके प्रयोगमे तऽ रूपक अलङ्कारक मानल जाइत अछि। तऽ कुछ युग आ मुखचंद दुनूके बीचमे हाइफनक सेहो प्रयोग अछि, तऽ भऽ गेल रूपक अलङ्कारक। फिर विकसित नहि कुछ कारण रे, ताहिमे कारण विकसित नहि भऽ रहल अछि, से घटना ओ नहि घटित भऽ रहल अछि कि कारण रहितो, तऽ कारण रहितो जे घटना घटित नहि भऽ रहल अछि तऽ ई भऽ गेल काबलिंग अलङ्कारक लक्षण। तो अलङ्कारमे हमसब देखलहुँ एहि पद्यांशमे जे आज देखल धनि जाइत रे मोहे उपजल रंग, कनक लता जन संचर रे महे निर अवलंब, तापुन अपूर्प देखल रे कुछ युग अरविंद, विकसित नहि कुछ कारण रे सोझा मुखचंद। एहि पद्यांशमे 4टा अलङ्कारक लक्षण अछि, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, रूपक आ काबलिंग। एखन नवमे कम्बाइंडवला ऑप्शन सब देल जाइत अछि। यदि चारू ऑप्शनमे यदि इएह तरहके अलङ्कार रहत तऽ 1 से अधिक अलङ्कारक लक्षण एहि पदमे मिलैत अछि। अगिला उदाहरण देखब चिक्कूर निकर तमसम पुन आनन पुनिम शशि, नयन पंकज के पतियाओत एकठाम रहु बसी। इहोमे जे अछि चिक्कूर निकर तमसम माने नायिकाक चिक्कूर माने केश जे अछि अंधकार रूपी रातिके समान अछि। तमसम निकर तमसम अंधकार रूपी रातिके समान अछि। पुन आनन पुनिम शशि, आ पुनः हुनक चेहरा जे अछि पूर्णिमाक चाँद समान अछि। नयन पंकज के पतियाओत एकठाम रहु बसी, आ नयन जे अछि नायिकाके पंकज कमल फूलके समान अछि, तऽ ओहिठाम नायिकाके वर्णन कयल गेल अछि अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा के। तऽ अतिशयोक्ति अलङ्कार सेहो भऽ गेल अछि। तऽ एकटा पहिल अलङ्कारमे मिलल अतिशयोक्ति अलङ्कार, आ विरोधाभास अलङ्कार सेहो अछि जे एके ठाम जे अंधकार राति पूर्णिमा रूपी राति, जखन अंधकार राति अछि तऽ चाँदनीके वर्णन नहि हैत, आ जब चाँदनीके वर्णन अछि तऽ अंधकार रातिके वर्णन अछि, तऽ एक तरहसँ विरोधाभास अछि। आ पंकज कमल फूल जे अछि सूर्यक रोशनीमे फुलाइत अछि, लेकिन ओहिठाम चाँदके रोशनीमे देखाओल गेल अछि। जे पुनिम शशि आ नयन पंकज एकठाम जे अछि सम्भव नहि छै, अंधकारो रहत चाँदनियो रहत आ पंकजो रहत, ताहिमे विरोधाभास अलङ्कारक सेहो लक्षण अछि। आ नायिकाक अंधकार सदृश केशके आ पूर्णचंद्र सदृश मुखमंडलमे उपमा अलङ्कार सेहो अछि।
केश के उपमा देने अछि अंधकार से, आ चेहरा के फेस के देने अछि पूर्णिमा से, चाँद से, पूर्ण चाँद से, उपमा अलंकार सेहो भऽ गेल। आ नायिकाक नील रंग जे आँखि अछि, नील रंगक आँखि में नील कमल के आरोप कयल गेल अछि, ताहिमे रूपक अलंकारक सेहो भेद अछि। ताहिमे भऽ गेल 4टा अलंकार इहो में मिलल, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार। पूरा संपूर्ण अथी के देखबै तऽ विरोधाभास अलंकारक लक्षण भऽ जाइत अछि। आगाँ देखबै संपूर्ण के तऽ अतिशयोक्ति अलंकारक सेहो लक्षण अछि, जे अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा के वर्णन कयल गेल अछि नायिकाक। इहो भऽ गेल शंकर उभयालंकारक लक्षण। एकटा आगाँ देखब उदाहरण अछि करब कोमल कर सुशोभन, करब कोमल कर सुशोभन जंग युग आरंभ। करब माने भऽ जाइत अछि तलवाक पिछला भाग जे अछि से, केहन अछि कोमल कर, कोमल नायिका में टांगक वर्णन कयल गेल अछि, जे नायिका कमर कोमल अछि, करब कोमल, तलवा से एकदम कोमल अछि। जंग युग आरंभ, जाहिठाम जांग के आरंभ अछि ताहिठाम के। तऽ जन मदन मलव्याम कारणे गढ़ल हाटक खम्भ। एहिमे फेर देने अछि जे नायिकाक पैर जे एहिना लागि रहल अछि तलवा से लऽ के जांग तक, जे एना लागि रहल अछि दुनू, जन मदन मलव्याम कारणे, मदन मान भेल कामदेव, मलव्याम कुश्तीक व्यायामक कारणे, कुश्ती से के समय अपन व्यायामक कारणे जेना दूटा खाम गाड़ने अछि तहिना लागि रहल अछि। नायिका के दुनू पैर जे अछि जे जेना लागि रहल अछि सुंदर, जेना कामदेव मल्लव्यायामक कारणे कुश्ती के समय व्यायामक कारणे दूटा खाम के गाड़ने अछि। तिहो में उपमा के कयल गेल अछि रूपक अलंकार आ उत्प्रेक्षा अलंकार। एहि तीनू अलंकारक लक्षण सब अछि, जे करब कोमल कर सुशोभन जंग युग आरंभ जन्य मदन मलव्याम कारणे गढ़ल हाटक खम्भ। तिहो में 3टा अलंकारक लक्षण अछि, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनू भऽ जाइत अछि शंकर उभयालंकारक लक्षण भऽ गेल। तऽ एहि वीडियो में हमसब देखलहुँ 2टा उभयालंकार। उभयालंकारक मुख्यतः 2टा भेद अछि, संसृष्टि उभयालंकार आ शंकर उभयालंकार। और अलंकारक आन वीडियो के लिंक एहि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध अछि, जे केओ नहि देखने छी जाके देख सकै छी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सब अछि, नेट के लेल अत्यंत आवश्यक अछि। नेट परीक्षा में ओहिसँ बाहर के अलंकार के शायद जे उदाहरणों अछि जे इएह में से मिल सकै अछि। कतेको बेर उदाहरण सबके रिपीट कयल गेल अछि, जे कोन उदाहरण कतेक बेर रिपीट भेल अछि, कतेक बेर दोहराओल गेल अछि, सेहो के एहिमे चर्चा कयल गेल अछि। यदि वीडियो नीक लागल हुए तऽ लाइक सब्सक्राइब सेहो करी। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।